Hello, my dear students. Welcome back to the lecture number 25 of Computer Applications with BlueJ Class 10th. In this video, we are going to continue with our unsolved Java programs. Okay, this is the part 4. In the part 3, we have also discussed some of the questions. So, this is a continuation of basically your part 3. Okay, so over here, see the 7th question. The first 6 questions we have discussed over there. Now, from 7th, we are going to start in this video. Now see the 7th question, what it says. Write a program to input a number and check whether it is a magic number or not. Display the message accordingly. Now, what is a magic number? A number is said to be a magic number if the eventual sum of digits of the number is 1. It means you have to continue the process. See, the example is what? It is 55. You have to basically break the number of digits. Okay, we are having 5 plus 5. It is now 10. अब टिल जब तक आपको यहाँ पर 2 डिजिट्स या फिर उससे ज़्यादा डिजिट्स मिलते रहेंगे तब तक यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू सर्टेन डिजिट्स एंड टेकिंग द एडिशन पार्ट. ओके, अब आप क्या करेंगे, आप इनको ब्रेक करेंगे एंड यू विल बी डूइंग अल्टीमेटली व्हाट 1 प्लस 0 एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ 1. इट इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर एंड द सम इज़ व्हाट, द सम इज़ 1. ओके, तो आपको कंटिन्यूएशन में चीज़ लेकर चलनी है जब तक आपका सम 1 नहीं आ जाता है. ओके, नाउ सी, अ नंबर इज सेड टू बी अ मैजिक नंबर इफ द इवेंचुअल सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज 1. लाइकवाइज ओवर सी हियर 55 को जब आप ब्रेक करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 5 प्लस 5 एंड 10 मिलेगा आपको, एंड व्हेन 10 को आप जब ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 0 यू विल बी गेटिंग 1. नाउ अगेन सी वन मोर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन गिवन 289. when you break the digits you will be getting 2 plus 8 plus 9. okay, now it is what, it is 19. Now again you are going to continue with the same. 1 plus 9, it is going to give you 10. Now again 1 plus 0, it is 1. Eventually we are getting 1 as a sum. Yes, so this number is also a magic number. So this is how we are going to check for a number entered by the user. Okay, now see the code over here. This is our class of question number 7, our main function scanner class to take an input. Now enter number to check. In the num we are going to store the number. Okay, now copy a number over here, int n equals to num. Now we are going to break and divide this n over here. Okay, now see this code, only this code you see it out for now. This one, sorry, this while one. Okay, now see, जब तक आपका n ग्रेटर देन 9 रहेगा. नाउ फर्स्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन? इट मीन्स कि जब तक आपका सिंगल डिजिट सम नहीं आ जाता है तब तक यू आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट. ओके, सो सबसे पहले आपने क्या लिया है, सम इक्वल्स टू 0 यू आर हैविंग. देन ओवर हियर वी आर डायरेक्टली ब्रेकिंग अवर डिजिट्स. yes, we are breaking our digits and we are finding out what, we are finding out the sum. yes, तो सम जब आपका यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जब तक आपका n 0 नहीं होगा तब तक सम कैलकुलेट होता रहेगा. लाइकवाइज वी आर डूइंग इन ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस ओवर देयर. यस, तो उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस सम को n में कॉपी कर देंगे. यस, एंड अगेन दिस विल हैपन फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि अगर आपका तब भी n सिंगल डिजिट नहीं हुआ देन अगेन इट विल ब्रेक द नंबर एंड इट विल गॉट द सम. ओके, एंड अगेन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अप टिल अनलेस आपके पास एक डिजिट नंबर नहीं आ जाता है. ओके, एंड एट द लास्ट व्हाट यू आर गोइंग टू चेक, अगर आपका n 1 आता है लास्ट में देन इट इज़ अ मैजिक नंबर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ मैजिक नंबर. ओके, नाउ अगेन लेट अस टेक वन एग्जांपल. let us suppose you are having this num as 55, the first example that has already been shown over there. Let us take the same one. Okay, now for this condition, while n greater than 9, the condition is what, it is true. Okay, so sum is over here, sum is currently 0. Yes, now this while n not equal to 0, it is going to divide the digits, it is going to take your quotient. Yes, and it is going to give you the sum. Now I have already been explained the working of this code many times, so I don't think so कि इसकी मुझे explain करने की ज़रूरत है. Yes, in the previous questions also I have already discussed this kind of code. So जब आपका ये while loop execute हो जाएगा, after the complete execution of the statements of this inner while loop, आपकी sum की value क्या आ जाएगी, you will be getting 5 plus 5, that is 10. Okay, now the value of sum is what, it is 10. After the complete execution of this inner while loop, ये आपका statement execute होगा. Okay, and the value of n will got changed. Initially it was 55, now it will become what, it will become 10. So again आपका while condition check होगी, that n greater than 9, the condition is again true.
फिर अगेन आपका सम ये सब इरेज हो जाएगा और आपका सम फिर से 0 से स्टार्ट होगा. ओके, एंड आफ्टर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप आपका क्या होगा, ब्रेक करता रहेगा एंड यू विल बी गेटिंग द सम ऑफ द डिजिट्स दैट इज 1. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स आप क्या करेंगे, जब कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा देन अगेन n की वैल्यू चेंज होगी. सो सम की वैल्यू 1 है, सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग n इक्वल्स टू 1 नाउ. नाउ अगेन दिस कंडीशन विल बी चेक्ड, n greater than 9, the condition is false. Now it will come out of the loop and this if else condition will be checked over here. Okay, so this is how you are going to solve for magic number. Now see, moving further, we are having question number 8. It is somehow the same. Now see, a number is said to be a multiple Harshad number when divided by the sum of its digit produced by another Harshad number. When write a program to input a number and check whether it is a multiple Harshad number or not. Okay, now firstly see what is this number. When a number is divisible by the sum of its digit. Okay, now directly see the example over here. 6804, you are having a number as an input. Okay, firstly what you have to do, you have to break the number into certain digits and you will be going to find out the sum. 6 plus 8 plus 0 plus 4, you will be getting 18 over here. Now this number should be divisible by 18. Okay, 6804 should be divisible by 18 and somehow question you will be getting because it is completely divisible. So over here see 378 is given. Yes, now if it is completely divisible then it is only a Harshad number. Okay, but it is asking for multiple H number. Yes, so again आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो आपका क्वेश्चन आया है it should also be a Harshad number. Okay, so आप इसको फिर डिवाइड करेंगे 3 plus 7 plus 8 you will be doing and again you will be getting what, you will be getting 18. तो अगेन अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे 378 डिवाइड बाई 18 तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए एंड सी ओवर हियर यू आर गेटिंग 21 नाउ. ओके, नाउ अगेन 21 को आप डिवाइड करेंगे 2 plus 1 you will be getting what, 3. Now 21 should be divisible by 3. Yes, it is completely divisible. और ये प्रोसीजर हम कब तक करते रहेंगे, तब तक you are having one digit number. ओके, तो जब तक हमारा वन डिजिट नंबर नहीं हो जाएगा जब तक हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते रहेंगे. ओके, नाउ सी द कोड हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. फर्स्टली these statements are same. Question number 8, public static void main scanner class, enter a number, copy a number in n, and we have used over here a flag. Flag is nothing, just a variable. Okay, furthermore when we will proceed further we will see that why we are using this flag and what is the importance of this flag over there also. Okay, so moving forward, see the code over here. Now please focus on this outer while loop. See, the outer condition is same, n greater than 9, because over here also we are going to stop when we are having only one digit number. In the magic number also हम लोग तभी stop कर रहे थे जब आपके पास one digit number हो रहा था. Yes, so this condition is exactly the same. Now see, again we have copied this n into val. Val is one kind of variable, nothing special about it. Okay, sum also we have calculated. Now see over here, same code, we are breaking our number. Yes, breaking our number and taking out the sum. जब यहाँ पर sum आपका calculate हो जाएगा then over here we are going to check if your value modulus sum equals to 0. It means कि अगर आपका completely divisible by sum है तो then क्या होगा, आपकी sum की value n के अंदर copy हो जाएगी and this else statement will not be executed and again you will be moving forward to this while loop. Okay, and again the same procedure will happen. एंड लेट अस सपोज कि अगर आपका ये वैल आपका सम से डिविजिबल नहीं होता देन दिस एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड और आपका फ्लैग की वैल्यू जो कि इनिशियली 0 थी वो 1 हो जाती एंड दिस कंडीशन विल गॉट ब्रेक. ओके, तो जब ये ब्रेक हो जाता है आपका तो क्या हो जाता है, आप इस लूप से बाहर आ जाते हो. ओके, एंड यहाँ पर अब आप क्या चेक करेंगे, यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपका फ्लैग 0 है या नहीं है. ओके, आपका फ्लैग अगर 0 है देन आप क्या करेंगे, इट इज़ अ मल्टीपल हर्षद नंबर और इट इज़ नॉट अ मल्टीपल हर्षद नंबर. यस, नाउ सी ओवर हियर आपका ये वाला ब्रेक कैसे काम करेगा. सी, हमारे पास ये आपका इनर वाइल लूप है एंड ये आपका आउटर वाइल लूप है. ओके, एंड दिस ब्रेक इज गोइंग टू terminate this outer loop because it is present in the outer loop, it is not a part of your inner loop, so please don't get confused in this break statement over here. ओके, ये ब्रेक आपका क्या करेगा, आपको बड़े वाले वाइल लूप से बाहर लेकर आ जाएगा. यस, सो आई होप द कोड इज क्लियर. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. ओके, now moving forward, see we are having some kind of patterns over here. Now see the first one, 131 531 7531 97531. Yes, now it is what, it is in the decreasing manner.
Yes, and we are having what? We are having a forward triangle. Yes, and over here is a difference of what? It is a difference of 2. Now keep everything in mind and see the code. We are having two loops, I and j. I is running for your rows and j is running for your columns. Okay, now see over here, we are having 1 3 5 7 9. The difference is again is of 2. Yes, we are taking till 10 because it is up till 9, and जब आप दो दो का आप इसमें इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो आप अल्टीमेटली 9 पर ही आकर रुक जाएंगे. Okay, now see over here, j equals to I. We are using j equals to I. Why? Because यहाँ पर आपका डिक्रीमेंटिंग वैल्यू चल रही है. अगर आपकी इंक्रीमेंटिंग वैल्यू चलती लाइक 1 1 3 1 3 5, तो आप क्या करते हैं? आप स्टार्ट से स्टार्ट करते. इट मीन्स j इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते एंड आप i तक लेकर जाते. बट यहाँ पर आपका जस्ट अपोजिट सारी चीज़ें चल रही हैं, सो दैट इज़ वाई यू आर यूजिंग दिस j इन अ डिक्रीमेंटिंग ऑर्डर. ओके, तो आपका j i हुआ, j greater than 0 and j equals to j minus 2, and over here you are going to print out what? It is j. Yes, please remember over here in the pattern series आप प्लीज़ इस बात पर ध्यान रखिएगा कि you are not having new line over here. New line आपका यहाँ पर होता है. Okay, so let us try to execute this code. We are having I over here, j over here and output over here. Okay, initially I is 1. Yes, the condition is true. Again, j is I, that is 1. J is greater than 0, the condition is true. Now it is going to print out j over here with a space. Let us define this space with this underscore. Okay, now again the value of I will be incremented, it becomes 2. Yes, again what happened? J will be starting from 2. Yes, so 2. Condition is true. Yes, so again it is going to print it out. Sorry, it is having I plus 2. So it will become 3, not 2. Because 1 plus 2 is 3, so j is going to start from 3 now. Okay, so this condition is again true. It is going to print it out j over here, so we are getting 3 over here also with a space. Okay, and j equals to j minus 2, you are having 1 for the value of j now. Okay, again j is greater than 0, condition is true. Again you are going to print it out 1 over here. Yes, after the complete execution of this inner loop, this new line again will got executed, so your cursor is over here now in the next line. Yes, when the value of I will be incremented, it becomes 5 and j will be starting from 5 again. So up till this our loop will continue and you will be going to get the exact answer, exact pattern you are going to get. Okay, so it is my suggestion to you कि if you are getting these pattern questions in your examination and if you are writing any code for it and if you are getting any extra time, so please you just try to execute your code. You take the value of I and j and please try to find out the output. In case you are not getting the exact output that is being asked in the question, so it means कि आपके loops में कुछ गड़बड़ है, and you please check the code over there also. Okay, moving forward, see the second question. You are having this inverted triangle. Now see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Again remember something. In the previous turn we have learned a series like this also. Yes, where we are running our code 1 2 3 4 5 6 7 8 9, something like this we are doing ना. So over here also आपका क्या हो रहा है, rows and columns आपस में interrelated नहीं है, so you have to take something from the outer side जिसकी value आप increase करते रहेंगे time to time and you will be printing it out everywhere. Okay, now see the code over here. The value of I, the value of j. We are having inverted triangle, so generally we are running our loop in a decrementing order. I should be 5 by 5 because maximum number of rows are 5. Okay, greater than 0, j equals to I, j less than equals to I, j equals to 1, sorry 1 से start होगा and I तक चलेगा. See, I आपका 5 से start हो रहा है. Yes, we can start I from 1 also, but आपका j फिर उसमें उसके accordingly change होता रहेगा. Yes, so आपका j जब 1 है, see over here I, over here j, over here, and we are having a also. Yes, and see the output. Now again see I is 5, so j is going to start from 1. Yes, the condition is true. Now it is going to print it out a over here. The value of a was 1, it has been declared over here. Yes, so the output is what? Let us write the output over here. It is 1. After the execution of this statement, you will be getting what? A tab. Either you can give a tab or you can give a blank space. It depends on you, depends on the question. Okay, a plus plus you are having now, so you will be getting a equals to 2. Okay, now again when the condition will occur, j plus plus, so j's value will become 2. Yes, again the condition will be true and you will be getting
2 on the screen. Again a plus plus, it becomes 3. For the value of 3, it will be printed as it is on the screen, and so on. Okay, after the value 5, yes, this condition will become false, and for the next iteration, it means for the I equals to 4, the same thing is going to happen, but not till 5, till 4 times. Okay, but it is not going to print it out 1 2 3 4 over there, because we are going to print it out a over here ना. So a की वैल्यू आप हमेशा इंक्रीज ही कर रहे हैं यहाँ पे. So यहाँ पर आपको 6 7 8 9 मिलेगा. It means 4 times you are getting the value, but the value is somehow different. Okay, so this is how you are going to execute this your ninth B part. Now see the ninth C part. Basically it is somehow related to ninth B also. Yes, ninth A and ninth B, it is a combination of both these two. So you please try this question by yourself. See the D part, you have to print the forward triangle, and it is just 1 0 1 0 1 0. Okay, when you are having such kind of code जहाँ पर आपको इस टाइप की कोई पैटर्न या सीरीज आपको एक कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट करनी होती है, तो आप पोजीशंस डिफाइन करते हैं. यस, सी इट इज़ द फर्स्ट कॉलम, इट इज़ द सेकंड कॉलम, इट इज़ थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम. ओके, तो फर्स्ट कॉलम में आपके पास 1 है, थर्ड कॉलम में भी आपके पास 1 है, फिफ्थ कॉलम में भी आपके पास 1 है. इट मीन्स ऑड नंबर्स जब आपके चल रहे हैं तो आपके पास 1 आ रहे हैं, एंड फॉर द इवन टर्म्स you are having what? You are having 0. So in the terms of even and odd, you have to divide the question. Okay, so this part also you tried by yourself. See the E part, it is very simple, inverted triangle. Yes, again this part you have to do it by yourself. Now this F part is basically, my dear students, is basically divided into 2 parts. Yes, try to have a look on this F part very closely. See over here, we are having 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5. This kind of thing we are having. Yes, 4 4 4 4 and 5 5 5. Yes, this kind of thing we are having a straight triangle. And now mixing with this, we are having 2 3 4 5. Yes, we are having 3 4 5. We are having 4 5 and 5. Okay, so this is again your inverted triangle, and this is your straight triangle. So there is a mixing and merging of two types of triangle. This kind of sample question also we have discussed, in which जहाँ पर आपका एक जो forward triangle था, that is in the number phase, and जो आपका inverted triangle था उसमें आप characters basically print कर रहे थे. So now see the code over here, that how we are going to solve this F part. See this kind of code we are having. I equals to 1, I less than equals to 5. Simply why? Because we are having this 5 number of rows. That is why we are running our loop from 1 to 5. Simply, very simple. Yes, for the very straight triangle you are running what? J equals to 1, j less than equals to I, and we are printing the value of I. Why? Because आपकी जितने भी रोज हैं उन रोज में कॉमन वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, एंड आई हैव टोल्ड यू कि जब आपकी कॉमन वैल्यूज प्रिंट होती हैं, सो एट द मेजॉरिटी आप आई को प्रिंट करते हो, नॉट जे को. ओके, सो ये जो आपका फॉरवर्ड ट्राइंगल है, ये तो आपका इससे आ जाएगा. ओके, एंड दिस वन, फॉर दिस वन वी हैव टू ट्राई समथिंग एल्स. सी के वी हैव डिफाइंड आई प्लस 1. वाई? बिकॉज जब आप यहाँ पर 1 को ले रहे हैं, ये आपका ट्राइंगल है, जब आप इसको 1 को ले रहे हैं तो ये आप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड जब 2 को ले रहे हैं आप 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 को ले रहे हैं 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड 4 को ले रहे हैं तो 5 से स्टार्ट कर रहे हैं. सो एवरी टाइम जो भी आपके आई की वैल्यू है, आप उसे +1 एग्जीक्यूट करके चल रहे हैं, एंड लास्ट वैल्यू आपकी क्या है? दैट इज़ योर 5. सो दैट इज़ वाई आपका के जो है वो आई +1 से एग्जीक्यूट होगा टिल लेस देन इक्वल्स टू 5, एंड ओवर हियर यू विल बी प्रिंटिंग के ऑन द स्क्रीन. ओके, नाउ येस, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज कि अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके लूप के बाद में आपके पास कर्ली ब्रैकेट नहीं होते हैं, तो आप ये अंडरस्टूड होता है कि उस लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, आपके आगे के सारे स्टेटमेंट्स नहीं हैं. सो यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट नहीं है. इट मीन्स यू आर नॉट हैविंग कंपाउंड स्टेटमेंट ओवर हियर, जस्ट अ सिंगल स्टेटमेंट यू आर हैविंग इनसाइड दिस फॉर लूप. ओके, सो सिर्फ ये आपका जो स्टेटमेंट है, दिस इज इनसाइड दिस वन जेस फॉर लूप, एंड आपका जो ये स्टेटमेंट है, दिस इज इनसाइड योर के लूप. और ये जो आपका प्रिंट एलन वाला स्टेटमेंट है, दैट इज आउटसाइड दीज बोथ इनर फॉर लूप्स. ओके, सो try to execute this code, try to find out the output, and let me know in case you find the same output or not. Okay, moving forward, we are having one more question, G part. Now try to compare this question with that part in which I told you कि आपको positions define करनी होती हैं 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0. This is the same kind of question, बस आपको 1 0 की जगह क्या करना है, स्टार और हैश में डिवाइड हो जाता है. तो आपका जो 1 3
एंड योर 5 पोजीशन, ये जो 3 पोजीशन है इस पे आपका क्या आ रहा है, इस पर आपका स्टार आ रहा है. एंड फॉर द पोजीशंस ऑफ 2 and 4 you will be getting what, you will be getting hash. Okay, so now see how we are going to solve this code. We are having, see, forward triangle. Yes, so I is 1, I less than equals to 5 because number of rows are 5. Yes, j is starting from 1 till आपका I तक चलेगा. Okay, so j's group is also the common. Now j की position आप define करेंगे because you are having different columns, not just different rows. ओके, तो जेस की पोजीशन डिफाइन करेगी. जे अगर आपका डिविजिबल है, इट मीन्स अगर इवन है तो एट इवन पोजीशन यू आर गोइंग टू प्रिंट इट आउट दिस हैश ओवर हेयर, और अगर आपका नहीं है तो सिंपली आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा. दिस इज हाउ एग्जैक्टली द सेम वे यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रीवियस 1010 क्वेश्चन ऑल्सो. बस आपको क्या करना है, इस हैश की जगह पर आपको 0 लिखना है एंड इस स्टार की जगह पर आपको 1 लिखना है. ओके, यू ट्राई दैट क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. नाउ सी दिस नेक्स्ट पार्ट, एच पार्ट. It is an inverted triangle. It is very simple, you can do it by yourself. And again the last one, I part. This is also your Floyd's triangle, and we have already learned in the sample program that how we are going to write down the code for your Floyd's triangle. Okay, I hope the codes are clear. Now moving forward, see, we are having this 10th question, that write a program to generate a triangle on an inverted triangle till n terms based upon the user's choice. Now see, user's choice, it has been asked, it means anyhow you will be writing out what, you will be writing out your switch case over here. तो switch case जब आप यूज़ करेंगे तो first one inverted triangle के लिए यूज़ करेंगे, second one आप यूज़ करेंगे, sorry, first one for a straight triangle and second one for an inverted triangle. Okay, see over here in the example, आपको ये type करना है as a menu, type 1 for triangle, type 2 for inverted triangle. ओके, एंड एंटर योर चॉइस. अगर आप 1 एंटर करते हो तो दिस काइंड ऑफ कोड शुड ऑकर, और ये एंटर करते हो तो दिस काइंड ऑफ कोड शुड ऑकर. बट एवरी टाइम इट शुड आस्क हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स. बाई टर्म्स मीन्स व्हाट, इट मीन्स बाई हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड. ओके, तो ये जो आपका ये जो फ्रंट वाला जो आपका कोड है, यू विल बी राइटिंग दिस कोड इन केस नंबर 1, एंड ये जो आपका कोड है दिस यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन केस नंबर 2. okay, and yes, obviously the main part is of your default also. default भी आप include करेंगे इसमें. okay, this 10th question also you try it yourself. See the 11th question. Using a switch case statement, write a menu driven program to print the Floyd's triangle. Again see, we are having the switch statement, case 1 for Floyd's triangle, case 2 for this ICSE. Now for the Floyd's triangle you already know, for this term, for this kind of term ICSE, let us see how we are going to solve this question. From the starting, see question number 11, a class, our main class, scanner, this menu, type 1 for Floyd's triangle, type 2 for ICSE pattern. Enter your choice. In CH we are going to enter our choice. Now one thing very important that I am going to tell you is that कि ये जो आपका चॉइस होता है, इट मीन्स जो आप स्विच के अंदर, स्विच केस के अंदर जो आप यूज़ करते हैं, ये CH या जो भी यूज़ करते हैं, दैट शुड बी आइदर इंटीजर और अ कैरेक्टर. ओके, इन दोनों के सिवा इट कुड नॉट बी अ स्ट्रिंग, it could not be any floating point number, it could not be anything else, just an integer and a character. बस इन दोनों ही होनी चाहिए, इसके सिवा नहीं होना चाहिए कुछ. okay, so you please remember this thing. Now in case you have entered 1, to this case will 1 will occur, and this is the code for your Floyd's triangle. You already know it, I have already explained it. Okay, now see, please focus on a plus plus over here. You know that it is your post increment operator. Either you write down this a in this line and in the next line you do it a plus plus. This is the same way. I have merged both lines and I have used here a plus plus. Okay, so don't get confused. Now focus on the case number 2. We have defined string s, that is ICSE. Okay, now how you have to print it out? ICSE, sorry, not this pattern, IC, ICS, ICSE. This is how you are going to write down this thing. Okay, so we know that when we are talking about a string, so our position starts from 0 till length minus 1. Now over here you have to find out the length na. So that is how we are going to apply this function over here that we have also studied in the 9th class, that is s dot length. Why s dot length? Because s में आपका ICSE stored हुआ है. yes, so आप क्या करेंगे, इस फंक्शन से इसकी लेंथ निकाल लेंगे, एंड वी आर हैविंग लेंथ -1, दैट इज वाई यू आर यूजिंग लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू. ओके, सो ये आपका क्या करेगा, 0 से लेंथ -1 तक चलेगा लूप आपका. नाउ फॉर जी यू आर रनिंग फ्रॉम 0 टिल आई. जस्ट सिंपली द केस वाई हाउ वी आर यूजिंग, सॉरी,
Simple is the case that how we are going to use our forward triangle. ओके आप पहले क्या करते थे, 1 से स्टार्ट करते थे ना आई तक लेकर जाते थे. नाउ वी आर रनिंग फ्रॉम 0 टिल आई. वाई? बिकॉज दिस इज अवर स्ट्रिंग एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रिंग द इनिशियल वैल्यू इज स्टोर्ड एट 0th पोजीशन. दैट इज वाई आपके लूप यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. ओके नाउ सी इन द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट व्हाट यू हैव टू डू, s डॉट कैर एट जी. यस आप डायरेक्टली कैरेक्टर तो प्रिंट नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग s डॉट कैर एट जी एंड प्लस स्पेस. ओके सो यहाँ पर फर्स्टली सिर्फ 0th पे जो आई आपका प्रेजेंट है वो क्या यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. ओके नेक्स्ट में जब आपके ln लाइन हो जाएगी आप यहाँ पर आ जाएंगे. सो ये लेंथ की वैल्यू आपकी आई की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड इट विल बी 1. सो फॉर j01 विल गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड, सो यू विल बी गेटिंग 1 IC. For the next iteration you will be getting ICS, and for the last one ICSA complete. Okay, and this case will also break down then. Okay, for the default you will be getting incorrect choice. I hope all the questions are clear. In case you are having any doubt then let me know. Okay, so this is all about your 9th chapter, that is your nested loop conditions. Okay, now see, one more thing I want to discuss with you is that this is the chapter number 1. You can easily find out this thing in your first in the starting of your book, that is your index portion. Okay, so this first chapter, revision of class 9th syllabus. Unit 1 we have completed, unit 2 also completed, unit 3, unit 4 we have completed, unit 6, 7, 8, 9, all these units we have completed, and we are left with unit 5th A as well as unit 5th B. Today only I am going to give you a lecture in which I will be describing your 5th A as well as 5th B. Okay, both of these are theoretical part. You have also studied the same thing, the same questions in your 9th class also again and again. Okay, so today only I will be uploading a next lecture in which I will discuss these 2 units. So please you watch that video also. Okay, and basically for this chapter number 1 this is about your unit test syllabus. So for the unit test, after when you are having your summer holidays over, then you might be getting your unit test date sheet, and accordingly we will follow that. We will see accordingly how the schedule is going to happen. Okay, so अगर आपका unit test होने लगे then you will be getting this first chapter as a syllabus of your unit test. So you please try to prepare this thing accordingly. Okay, everything you have to prepare regarding this chapter number 1. So this is basically the syllabus, and I want to complete this syllabus because today is the last day in which you are getting your videos. So I am going to give you one more lecture in which I will be discussing about this 2 units. Okay, so this is about this nested video and everything regarding your unit test syllabus. Thank you so much and keep coding.